this one because they've got two league matches still to be played. If they win this one, they might be in reasonable contention. So a very important game. Toss time. Toss ka boss. We have the co-owner of team Ace Chargers, that is Mr. V. Sarvaiya. Challenges to call. Tails is the call, and it is tails. Vikram, you win the toss. So what's your call, and what's the kind of approach and attitude you're going to be exhibiting in this last league match? Like you rightly said before me, we've come here today to have fun. It's not been our season and we accept that. There's no harm in denying that. So having said that, we have nothing to lose today and they have everything to play for. It's a must-win game for them, but they have a champion side. I can just see all star-studded team here, so maybe our best is left for today against the best team. So let's hope we have a good match today, and we'd like to bowl first. Yes, Vikram Panchwani, the skipper for Team Challengers, winning the toss and is inserted the opposition in. Gaurav Yadav, what's the kind of preparation? What's the mood in your camp? A very important game. Yeah, it's a big game for us. We were really hoping to actually also chase tonight, but we now need to put our head down, make sure we have a total on the board that we can defend. It's always an amazing moment playing against Vicky. It's just such a charged up side, and they're such wonderful people. So more than anything else, we'll definitely enjoy our game, but give our best. We are playing a full side today, so that'll help. And let's see how it goes. Good luck to both the teams. Wishing both the teams the very best. We've got a very special guest who's come to support Team Ace Chargers. We've got Mr. Rohit Talwalkar as our special guest of honor. Good evening and a warm welcome. He represents the iconic fitness. It's a very big name, Talwalkar. He also owns Sporting Tools. So good evening and a warm welcome. The news from the center: Team Challengers have won the toss and they've inserted Team Ace Chargers in. Wishing both the teams the very best. Match number 36 about to get underway. Thank you. Ready? One with a thumbs up. Ganpati Bappa. Stand in attention for the national anthem. Caps and hats off. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे
Mata ki Vande. Thank you. Ready?
कौन है रे? It's a different format, but it deals with it carefully. हेलो हेलो चेक बरोबर आहे की ज्यादा आहे?
Hello, check. Good evening and a warm welcome to match number 36 of the JD and Shubham Developers GSC T20 Season 4. The umpires have already taken the center pitch. Team Challengers, having won the toss, have inserted Team Ace Chargers in. A very important game for Team Ace Chargers, as Gaurav Yadav, the co-owner and the skipper, mentioned it's a must-win game. And they are playing a full squad, so that's the good news for Team Ace Chargers. It's going to be a very, very important game. They have 2 matches to go, including this one. On the other hand, Team Challengers, indeed a team with so much of potential in their arsenal. Unfortunately, they are languishing at the bottom of the table and they have not fired in this tournament. But tonight, as they take to the ground, they will be looking to enjoy the game, play some scintillating cricket to just show to the world what they are made up of. Hello, check. Hello. We have with us the convener of the GSC T20 League, that is Amit Mehrotra from Keyland Developers. Alongside him, Monish Shah. We have with us Mr. Rohit Talwalkar from the iconic Talwalkar's setup. He also owns the Sporting Tools, which is indeed a robust sports company. Requesting Vikram Panjwani to set his field. I'm sure that the opening duo of Team Ace Chargers will be all padded up. Looks like it. The umpires have already taken center stage.
It's already 1 minute past 7. The co-owners of team challenges, Vikram Panjwani, Rahul Jha and Hemang Pandit. Hemang Pandit from the Cryptomania, the web series, also happens to be the boundary sponsor of this tournament. On the other hand, the co-owners for Team Ace Chargers, that is Gaurav Yadav and Veer Sarvaiya. Gaurav Yadav also playing the tournament. We have Sanjeet Srivastava and the young Yadav Jr. to open the batting. Gaurang Karakasya, the wicketkeeper batsman for Team Challengers, one of the most senior most wicketkeeper batters. It's always a pleasure to be watching somebody like Gaurang Karakasya, that senior player, going about things, the way he prepares for the match, the way he motivates the team, the way he mentors the youngsters at the GSC, and more importantly, the way he keeps himself fit to make sure that he plays his best cricket right throughout. So that is one of the iconic players of the GSC, that is Gaurang Karakasya. The other night, Vikram Panjwani took the burden on himself, took the blame on himself for not firing at the top. A very optimistic captain and the co-owner for Team Challengers. The best man to lead the team. Things have not gone their way, but it can happen to any team. It's going to be Rahul Jha, one of the co-owners, and the Sankat Mochan player for Team Challengers, a problem shooter for the team, that is Rahul Jha. Most of the tournament, Rahul Jha has been injured and is not been able to gather his full fitness, not back to his normal self. In spite of that, is looking to be a part of the team, looking to make a contribution as always. So it's going to be Rahul Jha to be bowling, and for the first time in the last 3-4 seasons, I have watched Sanjeet Srivastava coming in to open the batting. He thinks of himself as a batting all-rounder. So we'll have to wait and watch how he exhibits his batting prowess tonight. A very important game. I'm sure that Gaurav Yadav, Veer Sarvaiya and the team have a specific game plan in mind. You cannot approach this kind of a big match without any direction. So yes, I'm sure that they have done the preparation well. Yes, the umpires all set. Lights, camera, action. Let's rock and roll. Hello. Rahul Jha, known for his military line and length. Anush Yadav and Sanjeet Srivastava, he's gone aerial. We'll have to wait and watch. That has kept the man interested there. He drops an absolute seater. That should have been taken for quite some time. The camp of Team Ace Chargers was in a spot. They had their heart in the mouth. Fortunately, no harm done. Making his intentions clear, that is Sanjeet Srivastava. He's been promoted up the order to play that cameo. Not enough elevation for the ball to go over the head of the man posted in that deep on. Nicely cut away. That will
find the Cryptomania boundary fence. The second Cryptomania boundary on the spot. The back of length delivery, but there was room on offer and nicely getting behind the line of the ball and putting it away into that swing point area. Once again the same kind of a delivery and the same result. Good seam presentation, but yes, the ball was leaving the batsman. Back of length delivery, ample time for Sanjeet Srivastava to play that scorching Cryptomania boundary shot. 3 boundaries. That is the Chetak Ply 6. Just look at the mindset of Sanjeet Srivastava. And all the shots that is played have been proper cricketing shots. This is an exciting start here for Team Ace Chargers. They will be absolutely shell-shocked with this kind of an approach and attitude. Sanjeet Srivastava exactly doing what has been asked to do here. And Sanjeet Srivastava, he's gone aerial. We'll have to wait and watch. That has kept the man interested there. We drop. Oh, nicely cut away. That will. Once again, the same kind of a delivery and the same result. That first over from Rahul Jha has cost Team Challengers 18 runs, and all the 18 runs have come off the blade of Sanjeet Srivastava. It's going to be Priyank Jain to open the proceedings from the infinity end. Left arm over the wicket. The man on strike is the young Yadav. In that channel outside the off stump, happy to just tuck it away, playing with soft hands. Yeah, this is one of his characteristics. Anush Yadav to treat the bowling on merit. He's got a sound technique. Still early days in his cricketing career, but he's got a good talent. That talent will have to be converted into a match-winning effort. Playing with soft hands. This is exactly what he needs to do. You do not want to be playing too many balls with a dead bat. Just play the good deliveries into the gap with soft hands. Especially when somebody like Sanjeet Srivastava is looking to be explosive, you need to give him most of the strike. You do not want to be leaving him high and dry at the other end. A big learning lesson for Anush Yadav. We are sure that he's got a very good future ahead of him. Sanjeet Srivastava, how will he treat Priyank Jain? The game on, the match on. A thickish inside edge, no need to run for that one.
that races into the Cryptomania boundary fence to take the score to 23. Is taking the bowling attack to the cleaners. He's on a rampage here. Runs coming in thick and fast. And that's a good bit of thinking there from the wicketkeeper standing close in. That's a very smart shot. He knew where the field was set for him. So Sanjeet Srivastava is not all about power. He waited for that ball to arrive onto the bat, just nudging it round the corner for one more Cryptomania boundary. Oh, what an extraordinary start here for Sanjeet Srivastava. The score on to 27 with that Cryptomania boundary. That's a very smart shot. What a start here. Was set for him. So Sanjeet Srivastava Is looking to explode right from delivery number one. He's made his intentions absolutely clear. He had offered an opportunity. He would have been dismissed quite cheaply. Fortunately for Ace Chargers, he's still there. At the moment, he's exhibiting that 360-degree range of shots. Sanjeet Srivastava is on a roll here. End of the second schedule group over. The scoreline is 31. With all wickets in hand, Sanjeet Srivastava is turning around the corner. Looks like they had enough time to strategize for this match. And what they are executing at the moment, that's looking a good game plan. Still early days. Sanjeet Srivastava wouldn't want to now let this good start go air-begging. He does not want to flatter to deceive. He's got to play that biggie. Straight away a change in bowling guard. It's going to be Vikram Panjwani, the skipper, to be bowling from the in-orbit end. The man on strike is Anush. The kind of approach from Sanjeet Srivastava will make Anush relax. We all know that he loves to play that orthodox cricket. He likes to treat the bowling on its merits, especially when it's early on in the match. There was into the pad, spraying down the leg side. Cryptomania boundary, 5 runs added to the tally. 36 runs at the end of 2 schedule group overs. That's a mind-blowing start. Sanjeet Srivastava has come out and is batting like it's nobody's business out here. Except for one delivery that he did not time well, that dropped catch. Otherwise, everything has raced away after connecting to his bat. there was into the pad, spraying down the leg side. Cryptomania boundary. That kind of a start will be a big relief for Ace Chargers. They will be a relaxed unit now. Clean bowled. Went through his defenses. There was some gap between the bat and pad, and it went through the gap. The first wicket down. It's going to be Ronak Sachdeva to replace Anush.
Anush will be disappointed because it was a good start and he could have stayed in the wicket and played his own game. The first Ketal Sanya construction wicket falling for Team Ace Chargers. Ronak Sachdeva, one of the key all-rounders for the team, walking out to the center pitch. .1 overs, 36 for 1. इस मैच की शुरुआत में टीम एस चार्जर्स ने यह दर्शाया है कि आज एक विशेष गेम प्लान के साथ उतरे हैं और बड़ी शिद्दत से उस गेम प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, ये उनकी मंशा नजर आती हुई। रौनक सचदेवा एक लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन अब एस चार्जर्स के लिए सेंटर पिच पर। स्लिप में तैनात किया है राहुल को। फास्ट डिलीवरी, थोड़ी सी फ्लैटर ट्रेजेक्टरी गेंदबाजी करते हुए विक्रम बहुत ही मंजे हुए प्लेयर है और हमेशा जब कभी मैदान पर उतरते हैं तो काफी सुलझा हुआ क्रिकेट खेलते हैं। काफी समय मिला रौनक को के बैकफुट पर जाकर स्क्वायर कट करे स्वीपर पॉइंट के क्षेत्र में, वहां पर फील्डर मौजूद, बड़ी आसानी से उस एक रन के साथ अपने खाते को खोला है। 37 रन बन चुके एक विकेट के नुकसान पर। इस इनिंग्स का तीसरा सेजल ग्रुप ओवर प्रगति पथ पर है। गेंदबाजी करते हुए कप्तान विक्रम, स्ट्राइक पर संजीत। 9 गेंदों में 30 रन बनाए, 6 चौके और एक बाहुबली छक्के के साथ। देखिए कितना मिनिमम एफर्ट और वो प्रीमियम रिजल्ट देख लीजिए, कितनी नजाकत से खेला। ये दर्शाता है कि संजीत श्रीवास्तव के पास किस तरह का हुनर है, किस तरह की प्रतिभा है और अगर उस हुनर और प्रतिभा के साथ अगर वो मेहनत मशक्कत की जोड़ लग जाए तो फिर एक ब्लॉकबस्टर प्लेयर नजर आएगा संजीत। बहुत ही शानदार तरीके से अपनी इनिंग्स का आगाज किया है। आज एक बड़ा स्टेटमेंट करने की फिराक में आज संजीत श्रीवास्तव का जन्मदिन है। हम सभी की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। यस, विशिंग हिम द वार्मेस्ट बर्थडे and may he have a wonderful cricketing year. He himself is looking to get himself a birthday gift. Nothing better than a terrific win out here. That will be the best birthday gift for him. Score at the end of 3 overs, 41 for 1. A food for thought for Vikram Panjwani. They have been taken a little aback with the kind of start that Sanjeet Srivastava has provided to the team. One would wonder what kind of a role Ronak Sachdeva has been assigned.
Left arm over the wicket to the left-handed man, Ronak. बढ़िया गेंद, थोड़ा सा अपने आप को कमिट किया था बल्ला, लेकिन उसके बावजूद थोड़ा देरी से नीचे आया. अच्छी चैनल गेंदबाजी प्रियांक की. लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन को इस तरह से सटीक तरीके से लाइन और लेंथ को एडजस्ट करना थोड़ी सी चुनौती होती है. रौनक सचते हुआ अगर सेट होकर अपना स्वाभाविक खेल खेलेंगे तो वाकई में आज की शाम एक अलग किस्म की रौनक डालेंगे इस मैच पर. महत्वपूर्ण मैच है और जो टीम के एस प्लेयर्स है उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट देना होगा. When the going gets tough, the tough get going. Time for the key link players to take their game a notch higher. बहुत ही रिलैक्स्ड नजर आते हुए संजीत, अच्छी रिदम में है. ही इज एट पीस विथ हिमसेल्फ. नो कॉबवेब्स इन द साइकी, नो डाउट्स इन द साइकी. इट्स अ क्लियर गेम प्लान एंड दैट इज व्हाई ही इज लुकिंग सो गुड हियर. अच्छी गेंद टप्पा खाकर थोड़ी सी अंदर की तरफ आई. अच्छा सीम प्रेजेंटेशन, हल्की सी अंदर की तरफ आई. सम्मान दिया पूरा उस गेंद को. बढ़िया शॉट, कितनी अच्छी टाइमिंग. बहुत ही विस्फोटक अंदाज में अपनी इनिंग्स को आगे बढ़ाया, लेकिन उसके बावजूद जो भी शॉट्स खेले हैं, ऑल द शॉट्स हैव बीन फ्रॉम द बुक. You'll find all these shots in the coaching manual. That's a terrific start. When you're bowling that kind of a line to a new batsman, you need to have that backward up point in the single saving position inside the circle. You do not want those singles to be given and getting back on strike this man, Sanjeet. You got to put the pressure on as far as the new batsman is concerned. You want him to be in the spot. 3.5 overs, 44. Well bowled. Quite a decent over from Priyank Jain. Such a good over. Scored at the end of a 4 Sejal group overs. It is 44 for 1. बिल्कुल बुलंद हौसलों के साथ खेलना होगा दोनों ही टीम्स ने, क्योंकि इस आखिरी मैच में टीम चैलेंजर्स अपने हुनर, अपने प्रतिभा और अपने अनुभव का एक उम्दा परिचय देकर इस टूर्नामेंट से बाहर जाना चाहेंगे. फिर से एक बार जीएससी को दिखाते हुए कि हम में किस तरह का दम है. जाते जाते एक अच्छा स्टेटमेंट देना होगा टीम चैलेंजर्स ने. विक्रम पंजवानी गेंदबाजी करेंगे रौनक को. वो अच्छी गेंद, स्लो टर्न. बहुत ही अच्छी तरह से उस रन को जज किया था. वो कॉल हमेशा से ही संजीत श्रीवास्तव का था. थोड़ा सा लेट रिएक्ट किया था रौनक ने, लेकिन महफूज तरीके से अपने घर वहां पर पहुंचे. कोई भी खतरा नहीं. हल्का सा टर्न वहां पर देखने को मिला.
उस टर्न को देखते हुए विक्रम और जो भी स्पिनर्स है टीम चैलेंजर्स की बॉलिंग बैटरी में वो काफी एक्साइटेड होंगे. एक्स्ट्रा कवर रीजन में प्रियांक, पॉइंट पर हार्दिक पंचाल, शॉट थर्ड, फाइन लेग पर शॉट फाइन लेग प्रितपाल, राहुल जा शॉट थर्ड. फील्डिंग में तब्दीली की है. छह 3 की फील्ड सजाई है. 3 ऑन द लेग साइड, 6 ऑन द ऑफ साइड. Well ball, that's the perfect pace. देखिए वो गेंद रौनक के आई लेवल के ऊपर से नीचे की तरफ आई. अच्छी गेंद. लगातार अपनी गेंदों में थोड़ा सा वेरिएशन दर्शाना होगा. Well ball and well played. Testing times here for team challenges. Is bowling at a good pace. Not looking to bowl too fast. When the wicket is offering you slow turn, you got to bowl a little slow, impart those extra revolutions so that the ball bites the surface. Back on strike, Sanjeet. The final ball coming up in over number 5, 47 for 1. In the last 2 overs, they have managed to put the brakes on to a certain extent. Terrific shot. That's a super class inside out shot for a Cryptomania boundary. 50 runs up on the board. 51 for 1 at the end of 5 overs. Up and away संजीत श्रीवास्तव सभी को मंत्र मुक्त करते हुए इस वक्त आज उनका जन्मदिन है और अपने शॉट्स का गुलदस्ता यहां पर सजाते हुए चारों ही तरफ अपने शानदार रन्स को बटोरते हुए बहुत ही बढ़िया रनों की रंगोली सजाई है. अगर इसी तरह से अगले 20-25 मिनट्स अगर विकेट पे रुक कर बल्लेबाजी करते तो मेरे ख्याल में बहुत ही पलटा भारी होगा टीम एस चार्जर्स का. जितना रन्स बटोर सकती है टीम एस चार्जर्स उतना रन्स मुकम्मल करना चाहेगी क्योंकि पता नहीं इस तरह के मैच में स्कोर कितना इनफ होगा. नेट ऑन रेट पर भी तवज्जो देना है. उस लिहाज से 185-190 का स्कोर जहन में होना ही चाहिए. कम से कम 180-190 जिस तरह की शुरुआत हुई है 190 प्लस. और क्योंकि आज फुल स्क्वाड खेल रहे इस चार्जर्स का. द मैन इन पिंक वर्सेस द मैन इन रेड. What a shot! Stand and deliver. Cryptomania boundary, one of the finest square cuts of the evening. Effortless shot. Not only exquisite timing, but the way he picked up the spot, that was even better. Runs coming in thick and fast, 55 runs. When you hit for a boundary of the first ball of the over, the pressure on the bowler. What a shot. Stand and deliver.
Well, Bolt was slightly slow to the air as he cut his fingers across. Too wide, looking to put the ball a little away from the range of the batsman, a little too wide. Priyank has been that decent opening bowler for team challenges right to the tournament. With the kind of late movement that he gets, the shape on the ball, the best position for Priyank Jain to be bowling is to be bowling with the new ball. Good hands, hand-eye coordination at its immaculate best. What a super Cryptomania boundary. Runs coming in from both the ends. The Mool mantra here for team Ace Chargers is not to spare the loose deliveries. The kind of form that they are in, they will even put those decent deliveries away. Oh, this time the back of length delivery, not such good timing. That shot selection has to be spot on. Even for somebody like Ronak Sachdeva, it's a good start, so you want to capitalize on this. And if you need to capitalize on this kind of a start, you got to make sure that you're spot on with your shot selection. You got to be very strong in the head. It's all about your state of mind. You got to pick and choose the right ones. 61 for 1. Well, that's a sparkling start here for team Ace Chargers. Exactly what they wanted here. Looking to put team challenges on the back foot at the start of the match. Under pressure, not exactly down on the mat, but under pressure team challenges. Through with this shot a little early, there was that big gap between the bat and pad, was looking to play it away from the body. End of the sixth Sejal group over. End of the Sejal power play period. 61 for 1. 3 men walking in. I hope that no 3 different messages are going across. Yes, they have sensed that this is a very important game, so they've come out well prepared. It's all about your mental preparation. They must have gone to the drawing board, and the think tank must have really burnt the midnight oil. Good game plan, and more importantly that execution is looking spot on. Match number 36 underway. The final league match for team Challengers. The penultimate league match for team Ace Chargers. If you look at the potential in the squad of team Ace Chargers, they are really looking pink. They are really looking pink in health if you look at that squad. What they have to exhibit tonight and in the next match, that is, they have to play pink cricket. They got to be in actual pink of form. Manav Gohil, after a sluggish start, Manav has exhibited his potential and is looking a very compact player. That's a shot in length delivery, gets the treatment that it deserved. Cryptomania boundary. That was a rank half pitch delivery, a loosener, putting it away in style. A lot of credit needs to be given to Ronak Sachdeva. He's not looking to play in the shadow of
Sanjeet Srivastav is gone out there to play his natural game. Maybe that's because he's been given the license by the captain to play his natural game. Better. If he finds his rhythm and if he puts the ball in the right area, this man can be a little challenging, Manav Gohil. It will not be easy to put him away for the big runs if he finds his rhythm. Manav will not give any extra pace to that delivery. The batter will have to pack a punch. Unless the ball is absolutely under the bat or it's in the range, it's going to be difficult to play the big shots to the kind of pace that this man offers. But for that to be a challenge, you have to put the ball in the right areas. Not like that. Not like that. Kleptomania boundary. Sanjeet Srivastava is on to 44 of only 19 balls. Just to look at the boundaries that is scored. 9 boundaries and 1 6. That's a 24 carat gold knock. You have to put the ball in the right areas, not like that. What a night he's having. Oh, that could have been a little dangerous. Well bowled. This is exactly where he needs to put the ball in that area at least 4 or 5 times in 1 over. A little dangerous, well bowled. Walking the ball away into that mid-wicket area, picking up a single. He's been damn good with his shot selection, Sanjeet Srivastava. From outside the boundary line, that would have looked as if he missed out on that opportunity, but that was very slow to the air and it was dipping into him. Not easy to negate that kind of a delivery. Putting it away for a single. Score at the end of 7 overs is 72 for 1. They have started like a Ferrari and they continue to play that exciting game. It's time for team challengers to put the brakes on, and to do so, the man with the golden arm, Prithpal Singh Baraj. What a meaningful start here for Ronak Sachdeva. He's on to 20 of 17 balls with 3 boundaries. He needs to stay put. Now he's got to eye that big knock. The key link players in the team Ace Chargers, they have to stay at the wicket, gather some valuable practice under the belt. What a dashing platform both these batters are laying for players like Jugraj to come and play the natural game. That tearaway innings from Jugraj in the very first match, that was an absolute gem. 141 plus not out from Jugraj. That was the best innings of the tournament. Manav in that deep mid-on area. Nishil Mittal has played 2 sparkling innings. Aniket Kawade the other night was just like any other day in office, a very meaningful innings to make sure that gangsters remained in the top half of the table at the number 2 spot. Team Riders, they are looking leaps and bounds ahead of the rest of the lot. Team Riders 7 wins out of 7. Terrific going for Team Riders. No need to run for that one. No need to run for that one.
absolutely no room for error. Not even the slightest margin for error when you are bowling to such a set man who is in a killer mood. No room for error. Cryptomania boundary to take the score to 77. No need to run for that one. No need to run for that one. That is the half century to Sanjeet Srivastava. This gift will not be enough. He's looking greedy for more runs. I'm sure that he will take a fresh card and make a new beginning. When you're in form, make the most out of it. Do not let it go away. Do not gift it away. Prithpal Singh Baraj, the job is cut out for him. Well bowled, opened him up. Opened him up square. Getting some good shape on the ball. No need to run for that one. No need to run for You that cannot one. underestimate Prithpal Singh Baraj. That would be dangerous. He's been a very consistent bowler over the last so many seasons. Oh, what a shot. Effortless, caressing the ball into that backward of point area. Collecting one more smart Cryptomania boundary to take the score to 82 for 1 at the end of 8 overs. A good evening and a warm welcome to Mr. Amardeep Singh Baraj. Oh, what a shot. Effortless. Ever smiling, always willing to encourage everybody here. He comes out to support the cricket at GSC, Amardeep Singh Baraj. They are looking to be a team on a mission. They are playing like soldiers out there. Definitely on a mission here. It's a very important game and nice to see that a lot of thinking has gone into the preparation before the match. That's a very good thing. All credit to the think tank of Team Ace Chargers. That is an handsome. We'll have to wait and watch. Straight into the belly of the man in that deep mid-on area. This time no mistake done. Not getting enough elevation there. Always difficult to put the ball out of the park when you're playing it on the back foot. What an innings. An absolute 24-carat goal innings comes to an end. The birthday boy on his way back to the pavilion. Here's once again wishing him a very happy birthday on behalf of the Goregaon Sports Club. May he have a wonderful year ahead. They will be more than happy to see the back of Sanjeet Srivastava. Kunal Jain picking up that important wicket with his very first delivery. So that's the vital breakthrough. This time no mistake. In comes Jugi with his customary red napkin tucking out of his shirt and trousers. That reminds us of the Amarnath brothers. They always used to have that red napkin as that lucky mascot. Yes, cricketers are very superstitious. Sometimes one particular thing works for you, you want to continue.
Team Challengers will be looking to even out the scale here. At the moment, the scale is tilted in favor of Team Ace Chargers. But if they play some fighting cricket here, if they play some very meaningful and purposeful cricket, there is no reason why Team Challengers cannot make a comeback in this match. It's going to be a tough battle out there. Jugi. Well bowled. Perfect delivery to a new man. Perfect. Picture perfect. Giving it the due respect. Some bite in that delivery. Playing with soft hands. At the very last moment, he adjusted his shot and opened his account with that single. That innings from Sanjeet Srivastava was punctuated with so many delectable shots. That was a symphony of poetic shots that he exhibited tonight. That dropped catch quite early on. He never looked behind after that shot. He grabbed that life with both the hands and made a big statement. On the other hand, Ronak Sachdeva is looking all grit and determination. As a professional player, you just got to go out there and do the job for the team. Whatever the role being assigned to you, you got to go out there and execute it. Well bowled. That's a good start there for Jain. He's mixing up the deliveries nicely. That wicket of Sanjeet has spurred him on. Very well bowled. Very well bowled. Not afraid to toss it up. He knows that his best chance to pick up a wicket will be when he flights that delivery. And when he bowls the flatter trajectory, the chances will go down a little. When you toss it up, when you flight it, when you look to buy that wicket, the chances will be brighter. End of over number 9, 83 for 2. The last over before the drinks interval. It's been smashing cricket in the first 9 overs. This kind of a start will really set the tone for the remainder of the match. Tonight they have no pressure on themselves, Team Challengers. Absolutely no pressure. कोई जरूरत ही नहीं है प्रेशर लेने की. उस तरह की स्थिति में है टीम चैलेंजर्स. इस टूर्नामेंट में ठीक तरह से डंके की चोट पर परफॉर्म नहीं कर पाए टीम चैलेंजर्स. उसके बावजूद हम सभी जानते हैं कि टीम चैलेंजर्स एक बहुत ही बढ़िया टीम है, शानदार टीम है. लेकिन आज जो रवैया इख्तियार किया है टीम एस चार्जर्स ने, 10 में से 10 इस रवैये के लिए. Was it a nothing shot or he was in total control? Vikram to Jugi. Cryptomania boundary that has damaged the chair as well. One of the legs is off the chair, so you do not want to be sitting on that chair. Good timing. That was as straight as an arrow. The flatter trajectory.
Jugi is now in that Mumbai under 23 squad. He's played a couple of tournaments, and that is why he's got to show what he's made up of. He's got to look the class apart. Never mind the number of runs that he scores, the way he approaches the game, the way he exhibits that body language as a Mumbai under 23 player. He's got to look the part. Sometimes you could fail with the bat, but what matters is for a big player, the body language, the attitude, the approach. Ronak. To don the Mumbai jersey in any age group, in any format, that is a dream come true. Fierce competition, fierce competition. And when players from GSC make the cut, what else do we want? Down the leg side, some extra turn in that one. The ball also kept a little low. Gaurang does well. Difficult to collect those down the leg side deliveries. Well bowled. Because the wicket keepers are blinded when they go down the leg side. So even for those down the leg side collections, you have to practice in the nets. End of 10 Sejal group overs, 90 for the loss of 2 Ketal Sanya concession wickets. Time for a break. Ready?
Welcome back. All along the carpet. That's a square drive. With that single, the score on to 91. Score after 10 overs was 90. The challenge is to maintain that 9 runs and over. They've got good wickets in hand, and they are a team that can really bat deep. I'm sure that they must have revisited the target during the drinks interval. बढ़िया फील्डिंग, ज्यादा जोर से खेलने का प्रयास न करते हुए केवल उस गेंद को लहराया. 92 रन्स. Kunal Jain seems to have struck a very good rhythm. He's bowling well, more than decent. So he remains to be the key link, and he'll have to bowl that brilliant spell. They need to bowl decently from both the ends. And 93. Well bowled. That's his best bet when he flights the ball, Kunal. That's got to be stock delivery. And if he keeps bowling like this, his stocks will definitely be on the rise here at the GSC. A good effort. Such a nice breeze. The temperatures have fallen over the last 3 days, especially during the late evenings and in the night. During the daytime, the temperatures have been quite high, but very pleasant evenings and more than pleasant nights with the temperatures falling. The score after 11 Sejal Group overs, 94 for 2. Big thank you to our title sponsor, Mr. Jaydev Gupta and Deepal Shah, JD and Shubham Developers. The boundary sponsor, Cryptomania, the web series, Mr. Himang Pandit, Chetak Ply, Maharaja of Ki Pasand. They've sponsored the sixes. The overs sponsor, Sejal Group, and the wicket sponsor, K. Talsania Construction. Rahulja comes back for his second spell. Switch in ends for him. $94 for 2 after 11. Pushing it away into that wideish mid-on area.
It's been the typical workaholic innings, the typical number 3 batter kind of an innings. An innings filled with purpose, innings filled with intent. Holding fort at one end, Ronak Sachdeva. Jugraj going about things on merit. At the start of the innings, in this kind of a situation, going by the book, it's got the kind of potential that he can explode at any given point in time. Too wide. क्रॉस पैट के साथ खेला. आइडियली स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेलना था, एक सीधे बल्ले को ऑफर करना था. अच्छी शुरुआत हुई और अब इस इनिंग्स को आगे मार्ग प्रशस्त करना होगा. जरूरी है कि रौनक सचदेवा आखिरी लम्हों तक विकेट पे डटा रहे. हार्दिक पंचाल, आर्किटेक्ट, रूम दिया था. हार्दिक पंचाल, आर्किटेक्ट. रौनक ने 32 गेंदों का सामना करते हुए 32 रन्स बनाए हैं. उस अच्छी गेंद को पूरा सम्मान दिया, हल्के हाथों से खेला, गेंद को शरीर तक आने दिया, बिल्कुल अपने नजरों के नीचे उस गेंद को खेला. जितनी भी गेंदों को जुगराज ने खेला है, करीबन हर गेंद को अपने सही बल्ले के हिस्से के साथ संपर्क साधा है और कोई विशेष गतिशील बल्लेबाजी करने का कोई प्रयत्न न करते हुए गेंदबाजी को मेरिट पे ट्रीट किया है. स्वागत है श्रीवल्स कुमार, प्रसाद करकेरा, अमित मेहरोत्रा, प्रमोद कश्यप, मोनिश शाह, ये सभी की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स है. इस GSC T20 लीग ओपन कैटेगरी टूर्नामेंट के कन्वीनर है अमित मेहरोत्रा. 45 प्लस की जिम्मेवारी प्रसाद करकेरा पर. प्रसाद करकेरा यूं तो हर किस्म के रोल में फिट हो जाते हैं और 45 प्लस का भी नियोजन उनके नेतृत्व में काफी अच्छा होगा, ये तो बिल्कुल विश्वास है. 12 ओवर्स के बाद 102 रन्स, 2 विकेट के नुकसान पर हार्दिक को काफी बिजी रखा है. बढ़िया थ्रो, चलिए परफेक्ट थ्रो. सुब्रमण्यम वेंकट और अमरकांत जैन ये प्रसाद करकेरा के साथ को कन्वीनर्स होंगे और 45 प्लस इवेंट जो हम सभी के दिल के बहुत ही ज्यादा करीब है. वो GSC का सिग्नेचर इवेंट है.
अब कहे तो क्या कहे, आसान सा कैच गोपाल भुतड़ा, रौनक तो गया था, बाल बाल बचे। संजीत का कैच छूटा, बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। रौनक का कैच छूटा, अब देखते आगे क्या होता है। बढ़िया स्क्वायर कट, कितनी नजाकत से खेला, बहुत ही मिनिमम एफर्ट लगाया, इस बात की शाश्वती ली कि वो गेंद गैप में जाएगी, ठीक तरह से टाइम किया, सही मौके पे उस गेंद को मीट करते हुए अपने स्पॉट को पिकअप किया। बहुत ही शानदार शॉट, क्रिप्टोमेनिया चौका। ये वाला शॉट दर्शाता है कि किस जोन में है जुगी। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी की, बढ़िया गेंद। ये फर्क होता है एक आधे एवरेज प्लेयर और एक चैंपियन प्लेयर के बीच। वो गेंद इतनी अच्छी थी कि शायद अगर कोई थोड़ा सा कमजोर प्लेयर होता तो वो उस गेंद को डेड बैट से खेलता, लेकिन जुगराज ने बढ़िया तरीके से उस गेंद को पुश किया, एक रन प्राप्त किया। बढ़िया शॉट, थोड़ा सा पिच खेला लेकिन पूरे नियंत्रण में थे। लगातार क्रिप्टोमेनिया चौकों का वर्षाव होता हुआ इन बड़े रन्स के लीकेज को, पाइपलाइन को काटना होगा टीम चैलेंजर्स ने अगर इस मैच में बने रहना है। नियंत्रण में थे। बिल्कुल सेट हो चुके और थोड़ा सा और विस्फोटक खेलना चाहते हुए, अपने गियर्स को शिफ्ट करना चाहते हुए। 13 ओवर के बाद 114 रन 2 विकेट के नुकसान पर। देखिए ऐसी स्थिति में है टीम एस चार्जर्स के, तो दोनों ही मैचेस को जीतना तो है ही, मैचेस को जीतते हुए उस नेट रन रेट पर भी ध्यान केंद्रित करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों ही मैचेस जीते और वो नेट रन रेट का मसला हो। तो मैच को जीतना तो है ही, ये परम कर्तव्य है, उसके साथ नेट रन रेट को भी पुख्ता रखना ये भी जरूरी है, क्योंकि आपको ऐसी स्थिति में नहीं आना है जब दोनों ही मैचेस भी जीतो और नेट रन रेट के वजह से आप पीछे पड़ जाओ। तो इसे सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया होगा टीम एस चार्जर्स की थिंक टैंक ने। हमारे अंपायर्स राजू पवार सर, प्रशांत दुबे सर और चौहान सर। प्रमोद कश्यप की प्रोमो प्रोडक्शंस इस एंटरप्राइज पर वो जिम्मेवारी है कि आप तक सभी मैचेस पूरे सीजन में लाइव कवरेज लेकर आए। जनवरी के आखिरी 2 दिन और फरवरी का पहला दिन
जनवरी का आखिरी दिन और फरवरी के पहले 2 दिन 55 प्लस के लिए टेनिस क्रिकेट का एक महोत्सव यहां पर आयोजित किया गया है। गए साल से उसकी शुरुआत हुई है और इस साल को कौशिक मेहता और उनकी टीम ने इस 55 प्लस इवेंट को जारी रखा है। और जैसे कल ही कौशिक मेहता ने बताया कि 55 प्लस का इवेंट होगा, 45 प्लस का इवेंट होगा और एक आधा इवेंट वो डिजाइन करते हुए टफ क्रिकेट भी होगा। तो अभी भी भरपूर क्रिकेट इस सीजन में बाकी है। भरपूर क्रिकेट मिलता हुआ जीएससी के मेंबर्स को। इतने मैचेस, करीबन 100 नाइट मैचेस, ऑर्गेनाइज्ड मैचेस, फ्रेंडली मैचेस के अलावा कोई भी क्लब पूरे मुंबई शहर में इतने मैचेस नहीं देता है अपने मेंबर्स को। मनीष नायर, he loves his cricket, passionate है और he wears the emotion on his sleeve. Manish Nair, that kind of a player. खराब गेंद सही अंजाम तक पहुंचा या क्रिप्टोमेनिया? सही अंजाम नहीं कहूंगा क्योंकि इस गेंद को तो बड़ा बाहुबली छक्का होना चाहिए था। देखिए 2 साल पहले जुगराज किस तरह से अपने इमोशंस को दर्शाता था, लेकिन अभी बहुत ही ज्यादा मैच्योर्ड हो चुका है एंड ही कीप्स हिज इमोशंस अंडर चेक। खराब गेंद सही अंजाम तक। It's not that you want to be keeping emotions under control all the time. Sometimes you got to exhibit those emotions even after such a checkered career. Just look at Virat Kohli. He still loves to exhibit those emotions. So not a bad thing, but exhibit it when it's the right time. That can come only with maturity. Mistime shot. ये वाली फील्डिंग की बैसाखी नहीं चाहिए गेंदबाजों को, सटीक और पुख्ता मजबूत बैसाखी चाहिए। भले ही आप इस लीग फॉर्मेट का आखिरी मैच खेल रहे हो और इस मैच का नतीजा बंदे लोग हैं, 17 नहीं आज। इन लोग 2-3 दे रहे हैं आपको एक्स्ट्रा। वेरी गुड यार। ठीक है, खड़ा रहता हूँ, चलता रहे, बैटिंग आ गया तो अभी भी होपफुल हूँ मैं। इतने अच्छी फील्डिंग इधर क्यों बैठे हो? Curtains like an event. Very good timing on that one, but cannot pick his spot. If he had to play it a little late, there was such a big gap there. Anyways, the score at the end of 14 overs is 123 for 2. We have with us Mohan Mittal, Alok Somani, who've come out to watch this interesting match. A very important game for Team Ace Chargers. They are looking damn good at the moment. A good crowd has gathered here.
warm greetings to everybody watching the match on YouTube or the Facebook page of GSC. We are into match number 36, a total of 44 matches to be played, including the qualifier number 1, the eliminator, qualifier number 2, and the grand finale, which happens to be on the 25th of Jan evening. After Thursday, we have a break of 5 days. Till Thursday this week, we have matches continuous, and post Thursday, we've got a break of 5 days. What a shot! Breaking the shackles. गुलामी की बेड़ियों को तोड़ते हुए बाहुबली छक्का बटोर लिया है रौनक सचदेवा ने. उस शॉट के बाद पहली बार उनकी बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा सा स्वैग नजर आया. 129 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि 15वां ओवर यहां पर शुरू हुआ है. What a shot! Breaking the shackles. गुलामी की बेड़ियों को तोड़ते हुए बाहुबली छक्का बटोर. युवराज नलावडे, मधुसूदन अय्यर का स्वागत है. देखना है कि कौन सी टीम किस प्लेयर को ऑक्शंस में पिकअप करती है, कौन सी कैंप. एक 130 रन 14.2 ओवर्स हुए हैं. 40 गेंदों में 48 रनों पर जा पहुंचे सचदेवा. रौनक सचदेव. Good effort by Kunal. Kunal is into his fourth over. He's tasted one success. The economy for Kunal is 7.20. Decent. Oh, he was looking for that big shot there. The balance was a little here and there. The head fell away. It's absolutely paramount that you have a still head. If your head falls along, it's not going to be the right kind of a timing. Jugraj is not somebody who relies so much on technique. Yes, you got to have a sound technique, but more importantly for Jugraj's game, it's his hand-eye coordination and the natural talent that he's been gifted with. More of a natural. But yes, you got to have that reasonable technique when you're playing that top grade in Mumbai. More than the technique, it's all about the match temperament for somebody like Jugraj. See, if you watch Raunak Sachdeva, he plants his foot forward a little early. In spite of that, at the very last moment, he adjusts. The adjustment was spot on. If you watch him closely, Raunak. Welcome to Avinash Mainkar. He will be all geared up for the 45 plus, and he will be hot property. Avinash Mainkar will be hot property at the auction. Alok Somani, he too.
77 minutes is what they have taken to accomplish their 15 overs. They had taken 49 minutes to bowl those 10 overs, 77 minutes to bowl the 15 overs. So they've consumed 2 minutes extra. Never mind, I'm sure that those 2 minutes can be counted anytime. They'll not be too bothered about that. Prithpal Singh Baraj. Shrivals, have a feeling he might be in that wicket keepers category. Are you? No, because so many wicket keepers are bowling as well. So I just wondered. What a shot, the bottom hand coming into play, that subtle wrist work. Good bit of work by Architect, is fielded very well. He's been kept quite busy. And when his turn comes along to bat, he'll have to fire on all cylinders. 130 for 2. $132 for 2, 15.1 overs. That single takes Ronak on to 49. The team score 133. Prithpal with his military line and length. Oh, nailing the Yorker. बिल्कुल जड़ में उस गेंद को किया था. देखिए किस तरह से उस जड़ में से उस गेंद को खेला थर्ड मैन की दिशा में. 100% बिल्कुल जड़ में थी वो गेंद. परफेक्ट यॉर्कर. प्रितपाल काफी सीनियर प्लेयर है, उसके बावजूद वो मेहनत मशक्कत करता है. बढ़िया गेंद. क्योंकि अगर आपको अच्छी टीम्स में खेलना है, आपको अच्छा क्रिकेट खेलना है, तो आपको फिट रहना जरूरी है और अपनी गेम को लगातार पॉलिश करना ये भी जरूरी है. सीनियर प्लेयर्स के लिए इतना आसान नहीं होता है, लेकिन मेहनत कर रहे हैं सभी लोग. That is the half century to Ronak Sachdeva. Well played. Gets a standing ovation, a very important game, and this is exactly what needs to be done. Those frontline players, they have to be at their best. The physio was attending Sanjeet Srivastava just 5 minutes back. What's the need for him to run inside? He was being attended by a physio. A very important game is coming up. तो ये सभी चीजें पे भी ध्यान देना होता है. कोई जरूरत ही नहीं ना स्प्रिंट होकर जाने की. Somebody else could have done the job. What a shot, and handsome, that will clear the boundary ropes by a distance. Chetak Ply 6, Maharaja की पसंद. $141 for 2 at the end of 16 overs. The final 24 balls coming up. What a shot, handsome, that will clear the boundary ropes by a distance. Chetak Ply 6, Maharaja की पसंद. हेलो
200 on the cards should have been. At the moment, it's looking difficult. 185, yes, definitely. That's not going to help the cause. Vikram comes back for his final over of the tournament. Clean bolt. Beaten all ends up. On his way back to the pavilion, one important Ketal Sanya concession wicket. See, that is what you call a brain fade, a moment of loss in concentration. The kind of form that he was in, the way he looked so settled, not the right kind of a shot to be playing. You expect so many good things from such players, because that wicket of Ronak could maybe cost the team 12 to 14 runs. In comes Jigar. वो बड़े जिगरा वाला player है. He's got his own methods of winning matches, scoring runs. A multi-dimensional player, Jigar. A total team man. बिल्कुल बड़ा एसेट है जिस किसी टीम के लिए खेले जिगर से बात हो रही थी कि उनके पाटन समाज के मैचेस भी शुरू हो चुके हैं. वेरी बिजी क्रिकेटिंग सीजन. Nothing can come in between Jigar and his cricket. Nothing under the sun. This is his first love. With that wicket of Ronak, maybe team challengers have ripped off that band-aid, but they still have that explosive Jugi to contend with. And Jigar, what a champion player Jigar is. A very street smart cricketer. But yes, he can have a big impact on the match. That is what he brings to the table. A fighting cricketer. The total street smart cricketer. हल्की सी गेंद नीचे रही. गौरांग को दौड़ लगानी पड़ी. बहुत ही कम मर्तबा विकेट कीपर को मिड विकेट की दिशा में हम भागते हुए देखते. पीछे की तरफ तो कई मर्तबा हम देखते हैं. बहुत ही मीनिंगफुल इनिंग्स खेली है जुगराज ने. दो साल पहले वाले जुगराज और इस सीजन के जुगराज में काफी अंतर है. बहुत ज्यादा मैच्योर्ड हो चुका है और बड़े मैचेस में किस तरह से अप्रोच, रवैया बताना, क्रिकेट खेलना, वो अब भली भांति जानते हैं. देखिए, ये वाला शॉट सिर्फ जिगर ही खेल सकता है. क्यों? मैंने पहले कहा, इसके पास स्वयं उसके मेथड्स है. हमेशा इंपैक्ट कर दिखाता है ये प्लेयर. इस वजह से सबसे पुख्ता स्ट्रीट स्मार्ट प्लेयर है जीएससी पर जिगर. क्रिप्टोमेनिया चौका. रन संख्या थोड़ी सी तेज रफ्तार से अब 148 रनों पर. लाइन को तब्दील किया. अच्छी गेंद, अच्छी वापसी उस चौके के बाद विकी के लिए. स्वागत है गजानन का. टाइमिंग साधारण थी.
एक रन प्राप्त हुआ। गजानन प्रमोद कश्यप ये नई गेंद के साथ गेंदबाजी करेंगे। 45 प्लस में ओपनिंग गेंदबाज की कैटेगरी में होंगे। ओपनिंग बैट्समैन अविनाश मयंकर, ही विल बी हॉट प्रॉपर्टी, शायद मार्की प्लेयर भी हो सकते हैं। आलोक सोमानी, जेम ऑफ एन प्लेयर, ही कैन बी दैट मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। आलोक सोमानी उस तरह का प्लेयर है। आलोक बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, स्ट्रेटेजाइजिंग सभी कुछ आलोक सोमानी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर लेता है। प्रितपाल का स्पेल बरकरार। प्रसाद करकेरा भी वो टॉप ऑर्डर कैटेगरी में होंगे। ओपनिंग कर सकते हैं, नंबर 3 पर आ सकते हैं। प्रसाद के लिए सबसे बेस्ट पोजीशंस वो टॉप 3 वाली है। Oh, what a shot. 150 on the board. एक रन मुकम्मल किया। पराग भी वो ओपनिंग बैट्समैन की कैटेगरी में होंगे। ऑक्शंस के पहले ऑक्शंस यहां पर होता हुआ, डिस्कशन तो वही है। वो माहौल बनना शुरू हो चुका है 45 प्लस टूर्नामेंट के लिए। थोड़ा सा फंबल कर गए थे लेकिन केवल एक ही एक्स्ट्रा रन दिया। 152 रन्स बन चुके हैं कुल मिला के। अब इस इनिंग्स में 16 गेंद शेष है, 16 गेंद बाकी है। जुगराज हर बंदिश को तोड़ के बिल्कुल विस्फोटक खेल सकते हैं कभी भी। स्वागत है विपुल कल्याणी का। Oh my. एक 154 रन बने हैं। प्रितपाल के ओवर में 2 गेंद बाकी है। ये 18वां सेजल ग्रुप ओवर प्रगति पथ पर है। 3 के तलसानिया कंस्ट्रक्शन विकेट्स खोए हैं। गति में परिवर्तन किया था, बैकफुट पर जाकर प्रहार किया, अच्छी टाइमिंग, लेकिन गैप नहीं पिक कर पाए। काफी डिसेंट ओवर प्रितपाल सिंह बराज का। इस तरह की स्थिति में अगर वो 175-180 रनों के अंदर बांधे रखते तो मेरे ख्याल में टीम चैलेंजर्स अपने आप को बैक करेगी उस स्कोर को चेस डाउन करने के लिए, विशेष रूप में जब किसी भी तरह का कोई प्रेशर आज नहीं है।
18 ओवर्स के बाद 157 रन। Hoping against hope, Rahul. Wide गेंद 158। देखिए मंशा यही है कि फ्लैटर ट्रेजेक्टरी गेंदबाजी करे, जुगराज को रेंज में गेंद न दे, लेकिन जब एक आधे चैंपियन बल्लेबाज के पास चारों भी दिशाओं में खेलने वाले शॉट से तो फिर वो मुश्किल होता है। लेकिन कोशिश यही है कि थोड़ी सी तेज रफ्तार से फ्लैटर ट्रेजेक्टरी गेंदबाजी करे। चलिए देखना है कि इस गेंदबाजी के लिए क्या तोड़ है जिगर के पास। वो सक्षम तोड़ नहीं था, लेकिन स्वागतार्ह क्रिप्टोमेनिया चौका टीम एस चार्जर्स के लिए। दैट विल हेल्प द कॉज। 163 रन बने हैं उस क्रिप्टोमेनिया चौके के साथ। 10 गेंद बाकी है। ऊपर गई, लंबी नहीं गई है। अच्छी गेंद, पीछे दौड़ लगाई थी, पहुंचते तो भी वो कैच अटेम्प्ट नहीं करते राहुल, क्योंकि फिंगर इंजरी से वापसी की है। उस तरह के कैच को लेना यानी कि कयामत को न्योता देने जैसा है। चार रन्स मिले आखिरी वक्त पर। अपने शॉट को थोड़ा सा बदला, हैंड आई कोऑर्डिनेशन के चलते करार रहा क्रिप्टोमेनिया चौका। इतने सेट हो चुके हैं जुगराज कि किसी भी गेंद को किसी भी दिशा में खेल सकते हैं। हर किस्म की गेंद के लिए जवाबी कार्रवाई है। क्योंकि पहले शफल हो चुके थे, उस वजह से उस गेंद को वाइड करार नहीं किया, और राहुल ने भी फॉलो किया जुगी को। हल्के से बचे राहुल जा वो इंडिकेशन देते हुए। 19 ओवर के बाद 169 रन्स, 169 आफ्टर 19। द फाइनल 6 balls coming up. Let's have a look at Rahul Ja's spell. Quite an expensive one. 3 overs, 38 runs is what is given away. Pritpal Singh Baraj, 3 overs, 28 runs. Pritpal will continue. Pritpal, with his experience, he will be game for the battle ahead. Pritpal has been in this situation so many times. So nothing new, this kind of a challenge for Pritpal. He's just got to keep things quiet, just maintain his calm. Just stick to the basics, Pritpal Singh Baraj, and hope for the best. Stick to your basics. Do not try anything extraordinary and hope for the best. The final 6 balls, 169 it is.
That second run was always on the cards. The moment he fell to his left with the ball, that second run was always there for the taking. 171. 5 balls to go. Prithpal to Jugi. That is belted away. Once again, that same man in action. This time he prevents the second run. Good bit of work. 172. 4 to go. Krupesh Fofadia, right arm over the wicket. What a shot, super timing. The flattest 6 of the tournament, the flattest Chetak Ply 6. Terrific timing. कहां से वो ताकत निकालते हैं जिगर पता नहीं, किस तरह से वो टाइमिंग को गैदर किया. छह रन्स लगातार 2 चेतक प्लाई छक्के. मोमेंटम फिर से एक बार एस चार्जर्स के पक्ष में. देखिए ये शॉट आपको कोचिंग मैनुअल में नहीं मिलेगा, हालांकि बल्ला थोड़ा सा हाथ में फिरा था, टाइमिंग अच्छी न होने के बावजूद वो चेतक प्लाई छक्का मिला. थोड़ी सी ऑकवर्ड पोजीशन में होने के बावजूद. कोई भी नहीं. $185. Jugi's on 46. Oh, that is the half century. Commit the hour, commit the man. What a flourishing end to the innings. They are put on 191 on the board. 192 runs to win the match. A mountain to climb. That last over went for quite a few runs. The momentum has shifted back into the camp of Team Ace Chargers. एक वक्त ऐसा था जो 3-4 ओवर्स पे ऐसा लग रहा था कि शायद वो 185 के अंदर वो पारी सिमट जाएगी, लेकिन आखिरी ओवर में जिस इंटेंट के साथ बल्लेबाजी की, मेरे ख्याल से ये बहुत ही पुख्ता स्कोर है. केवल इस बात की खबरदारी लेनी होगी कि टीम चैलेंजर्स भूखे शेर है और आखिरी मैच में बिना कोई टेंशन लिए, बिना कोई प्रेशर लिए बल्लेबाजी करेंगे. इस बात की खबरदारी लेनी है. चलिए समय हो चुका है मिड इनिंग्स ब्रेक के लिए. थैंक यू.
Ready? And Sanjeet Srivastava, he's gone aerial. We'll have to wait and watch. A nicely cut over the lateral.
Ready?
Ready?
180.
check. Hello. Welcome back to the second half. 192 runs to win the match. This should be quite an exciting second half. Team challengers to persist with the same opening duo, Vikram and Gaurang. It's going to be Umang to bowl from the infinity end. Playtime. Putting that back of length delivery into the wideish mid-off area. Pick up the second run, well judged by Gaurang. Nicely getting on the top of that one, Vikram. That's a good channel and well left. Watching the ball so late till the time it went past him, Vikram. One of the prolific run getters for team challengers over the last 3 seasons. And an absolute gem of a player. Gaurang Karakase at the non-striking end. .191 on the board. That's a terrific score. Will have to be at their very best team challengers if they need to get to the target. Obviously, the game plan from Umang is to bowl in that corridor of uncertainty outside the off stump. That's a channel where he's looking to bowl at most times. Keeping the ball a little outside the off stump. The kind of field that is set for Vikram, that line has to be outside the off stump. Only 3 men on the leg side, 6-3 field. The change in pace, and that was so full in length.
Oh, he goes after it. Well struck, and that will go into the Cryptomania boundary fence. Score at the end of the first over is 6 for none. 192 runs to win the match. It's going to be Gaurang Karakasia to face Sanjeet. In this all important game, Sanjeet given that big responsibility of opening the batting and also the bowling. The area for Fadia it is. Yes, this man can really work up some good pace. Although he's not such a tall man, but he really puts his shoulder into that delivery stride. It will be very interesting to see how he unfolds his seam bowling here. धैर्य केवल दिशा दी. देखिए किस तरह से उस शॉट में ज्यादा जोर लगाने की कोशिश न करते हुए केवल सहलाया उस शॉट को. डीप मिड ऑन पर उस गेंद को खेलकर बड़ी आसानी से वो एक रन प्राप्त करते हुए रन संख्या पर जा पहुंची है 7 रनों पर. लेग और मिडल का गार्ड लिया है और उस लेग एंड मिडल गार्ड के बिल्कुल बीच में खड़े होते हुए विक्रम बहुत ही ज्यादा मायने रखता है ये गेम एस चार्जर्स के लिए. बहुत ही बढ़िया स्कोर स्थापित किया है. जरूर है कि अब अच्छी गेंदबाजी करते हुए अच्छी तरीके से इस टारगेट को डिफेंड भी करे. दूसरी तरफ विक्रम और गौरांग की सोच बहुत ही सकारात्मक होगी. मेरे ख्याल से आज की शाम किसी भी तरह से वो रिस्की रन्स भागने की कोई जरूरत है ही नहीं. जो स्थिति में है वो रिस्की रन्स लेना बनते ही नहीं है. उस तरह के शॉट्स को रोकने के लिए संजीत को तैनात किया है बाउंड्री लाइन पर. देखिए वो पोजीशन को डिस्क्राइब करना बहुत ही मुश्किल है जहां पर संजीत खड़ा है और एक विशेष सोच के चलते वहां पर उस फील्डर को विक्रम के लिए पोस्ट किया है. गौरांग के लिए उस प्लेयर को ऑर्थोडॉक्स पोजीशन में रखा है. तो अच्छा होमवर्क करके उतरे हैं. बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर लेग पर राजीव.
JDM शुभम डेवलपर्स GSC T20 लीग सीजन 4 का ये 36वां मैच। कुल मिला के 44 मैचेस खेलने हैं। 25 जनवरी को ये ग्रैंड फिनाले होगा। हाफ वॉली को ड्राइव किया, देखिए संजीत को उस जगह पर तैनात किया है। काफी शॉट्स उस रेंज में खेलते विक्रम पंजवानी, तो बड़ी शिद्दत से अपने होमवर्क को करके उतरी है टीम एस चार्जर्स। कम से कम इतना तो होगा उस फील्डर को वहां पर देखकर विक्रम पंजवानी के जहन में एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा सोच डाली है। दो ओवर की समाप्ति पर 12 रन बिना कोई नुकसान के। उमंग का स्पेल जारी रहेगा। स्ट्राइक पर है विक्रम, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर विक्रम गौरांग कराकासिया। इसी जोड़ी ने ज्यादातर सभी मैचेस में बल्लेबाजी की है। कि आखिरी मैच में विक्रम छाप छोड़ेंगे। वो बहुत ही सक्षम प्लेयर है, हर लिहाज से एक कंप्लीट प्लेयर कह सकते हैं विक्रम को। बहुत ही स्मार्ट क्रिकेट खेलते हुए द मैन इन पिंक। अभी भी काफी क्रिकेट शेष है, लेकिन अच्छी शुरुआत की है। अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ इस लक्ष्य को डिफेंड करने की मेहनत मशक्कत करते हुए। दूसरी तरफ दो बहुत ही मजबूत बल्लेबाज विकेट पर है चैलेंजर्स के लिए। देखिए, इसके बावजूद कि उनकी टीम अच्छी स्थिति में नहीं और ये सलामी जोड़ी इतने ज्यादा कर्तव्य नहीं दर्शा पाई है, उसके बावजूद विश्वास जताया थिंक टैंक ने दोनों ही बल्लेबाज पर। दे स्टिक टू द सेम कॉम्बिनेशन। बहुत ही बढ़िया स्क्वायर कट, सही समय पर बल्ले के फेस को खोला। क्रिप्टोमेनिया चौका, पूरी तरह से उस ऑफसाइड कॉर्डन को चीरती हुई वो गेंद निकली। क्योंकि लेट खेला उसी वजह से विक्रम अपने स्पॉट को पिक कर पाए। आत्मविश्वास भरा शॉट। रन संख्या जा पहुंचती है 18 रनों पर। तीसरा सेजल ग्रुप ओवर इस वक्त प्रगति पथ पर है। उमंग गांधी नई गेंद के साथ इन्फिनिटी एंड की तरफ से ऑपरेट करते हुए। थोड़ा सा गति में परिवर्तन किया, वहां पर जिगर मौजूद है। एक दौड़ लगाई है इसके पहले कि जिगर उस गेंद को रोके और विकेट कीपर के पास फेंके। बड़ी आसानी से दूसरा रन भी मुकम्मल किया। उमंग अपने मजबूत पक्ष को पकड़ते हुए वो मिडिल और ऑफ स्टैम्प की लाइन और लेंथ एरिया में गेंदबाजी करते हुए। बढ़िया शॉट, वन बाउंस इनटू द बाउंड्री फेंस। क्रिप्टोमेनिया चौका। This is more of the Vikram that we've known over the last 3 seasons. And if he comes good tonight, it's going to be a treat to watch. The danger man here for team Ace Chargers, that is Vikram.
all along the ground. Not afraid to pitch the ball further up. He's looking to make the ball talk a little bit. That late movement is what he's looking forward to. And if you want that movement in the air, you got to pitch it further up to the batsman. So yes, he's bowled with a brave heart. End of the over from Umang. Score after 3, 24. All wickets in hand. The area will continue. It's going to be GK on strike. बहुत ही जल्दी अपनी उस गेंद की लंबाई को पिक किया. करारा क्रिप्टोमेनिया चौका. थोड़ी सी छोटी सी गेंद थी, इतनी खराब गेंद नहीं थी, लेकिन जिस तरह का पोटेंशियल है गौरांग के पास, बहुत ही जल्दी पिकअप किया उस बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी को. क्रिप्टोमेनिया चौका. धैर्य को बड़े धैर्य के साथ गेंदबाजी करनी होगी. बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है. पूरी तरह से टीम एस चार्जर्स के आगे का सफर इस मैच के नतीजे पर निर्भर है. उससे यात्रा पर अगर बरकरार रहना है तो इस मैच को अच्छी तरीके से जीतना है. बहुत ही बढ़िया लक्ष्य स्कोरबोर्ड पर स्थापित किया है. गेंदबाजों ने केवल उनका अब करिश्मा कर गुजरना है. बहुत ही बढ़िया पिकअप किया. थोड़ी सी ऑकवर्ड पोजीशन में थे, बैक हैंड के साथ उस गेंद को कलेक्ट किया. अच्छा रिटर्न और बहुत ही जल्द उस गेंद को थ्रो बैक किया. 2 रन लेने से नहीं रोक पाए. उमंग भी अपनी टीम का एक मल्टी डायमेंशनल प्लेयर है, नेचुरली गिफ्टेड. जो गौरव यादव ने टॉस के वक्त बताया कि हम आज फुल स्क्वाड खेल रहे, वाकई में बहुत ही पुख्ता स्क्वाड है इस चार्जर्स का. लेकिन जो 2 बल्लेबाज विकेट पे है, विक्रम और गौरांग, ये हल्के फुल्के प्लेयर्स नहीं है, बिल्कुल वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स. What a shot. He made it look so easy. Cryptomania boundary. That wasn't a bad delivery at all. It was into the stumps, was a length delivery. It was the pure elegance of Gaurang Karakasia that took the ball past the Cryptomania boundary. They're dealing in boundaries. That's the only way that they can get close to the target. They'll keep on batting like this. Ideally, they would want both of them to be unseparated when they go into that drinks interval. And if that happens, team challenges might get into a very strong position if they can remain unbeaten at the time of the drinks interval. Pressure free situation. Both the players can play their game. They can play with the gay abandon. Well bowled, the slow one. That was well disguised. Important runs being collected.
3.4 overs, 40 for none. The current run rate 9 plus. Just about the perfect start, but still a long way to go. A good start is half the work done. बहुत ही साधारण टाइमिंग, इसके बावजूद एक रन की बढ़ोतरी हुई, 41 रन्स। आज किसी भी तरह से टीम चैलेंजर्स के खेमे में जरा भी टेंशन नहीं है। जो भी टेंशन है वो एस चार्जर्स के कैंप में है। हालांकि बहुत ही बढ़िया लक्ष्य स्थापित किया, इसके बावजूद टेंशन उसी खेमे में है। ये सभी यंगस्टर्स के लिए, यंग गन्स के लिए ये वाला टूर्नामेंट एक बड़ी सीख है। इट्स अ लर्निंग कर्व। At the end of the season, I'm sure that all those young players will be better cricketers at the end of the season. Score at the end of 4 Sejal Group overs, 42 for none. Time to thank our title sponsor, JD and Shubham Developers, Cryptomania Web Series, the associate sponsor, Chetak Ply, Maharaja of Kipasand, the sixer sponsor. The overs in this tournament being sponsored by Sejal Group, and the wickets courtesy Ketal Sanya Construction. Change in bowling guard, Sanjeet Srivastava being introduced. We all know him as the death over specialist. More often than not, we see him in action as a bowler post the drinks interval, but it's been handed over the new ball, semi-new ball you may call it, not exactly the new ball. All of a sudden the breeze has stopped. Warm welcome to one of the co-owners of Team Challengers, that is Himang Pandit. पारस बुद्धदेव भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। कौन सी टीम पिक करेगी देखना है पारस को। अच्छी एफर्ट। इस तरह की एफर्ट पूरी टीम का मोरल बूस्ट करती है। संजीत बहुत सारे वेरिएशंस है संजीत के पास, लेकिन ये सभी प्लेयर्स एक दूसरे की फितरत को भली भांति जानते हैं। वो गेंद काफी दूर थी विक्रम की रेंज से। टाइमिंग सटीक दर्शानी है तो फिर वो गेंद के करीब जाना होगा। वो जो ट्रांसफर ऑफ वेट होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। पहली बार अब जोन में नजर आते हुए इस टूर्नामेंट में, पहली बार। दुर्भाग्यवश ये आखिरी मैच में रिलैक्स नजर आते हुए कोशिश कर रहे कि अपनी क्षमता के अनुसार आज एक अच्छी इनिंग्स अनफोल्ड करे। शुरुआत अच्छी हुई है। गौरांग के बल्ले से 2 या 3 फाइटिंग इनिंग्स हम देख चुके हैं।
जिस तरह से अनिकेत कवाड़े जैसे सीनियर प्लेयर हर मैच को लाइक एनी अदर डे इन ऑफिस ट्रीट करता है, गौरांग भी उसी तरह का प्लेयर है। ओ खराब शॉट, 4 रन्स मिलेंगे, लेकिन देखिए वो पोजीशन में नहीं थे उस शॉट को खेलने के लिए, वो मोमेंटम गैदर करने का मौका ही नहीं मिला, क्रैम्प हो गए थे। बाहरी किनारा लेकर क्रिप्टोमेनिया चौका, स्वागतार्ह रन्स टीम एस चार्जर्स। टीम एस चार्जर्स किसी भी तरह से उस स्थिति में नहीं है कि 1% भी रिलैक्स करे, रिलैक्स करेगी भी नहीं ये टीम। सभी प्लेयर्स जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण मैच है, लगे हुए डटे हुए सभी प्लेयर्स। बहुत ही ज्यादा वाइड, मंचे हुए खिलाड़ी है संजीत, जानते हैं कि किस तरह की अपेक्षाएं है संजीत से। आखिरी वक्त पर अपने शॉट को चेक करने पर मजबूर हुए। शानदार लक्ष्य स्थापित किया है 191 रनों का, पहली ओवर से लेकर 20वें ओवर तक सकारात्मक बल्लेबाजी की। वो यशस्वी जायसवाल टाइप अपरकट का एक बढ़िया मौका था, वही शॉट बनता था। 1 रन की बढ़त, रन संख्या अब 5 ओवर्स के बाद 52 रन बन चुके बिना कोई विकेट खोए। 10 रनों की रन रेट के साथ इस इनिंग्स को आगे बढ़ाते हुए सभी विकेट सुरक्षित है। एक वार्निंग बेल, खतरे की घंटी बजती हुई एस चार्जर्स के लिए। अच्छी बात है कि इस तरह की खतरे की घंटी बजती रहे, क्योंकि फिर ऐसे हालात में रिलैक्स नहीं करेगी टीम एस चार्जर्स। वो अलर्ट रहना, मैच सिचुएशन को बिल्कुल अपने नियंत्रण में रखना, यह बहुत ही जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अनुष को अब गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया है। इस वक्त कप्तानी की बागडोर संभाले हुए जुगी, विकेट कीपर के रूप में भी राम गोयंका, वो भी एक बहुत ही मंजा हुआ खिलाड़ी है। ग्यारह नंबर की जर्सी राम गोयंका की, उमंग गांधी की भी 11 नंबर की जर्सी। जिगर और सुनील देवली, they do not settle for any other number. 333 is what they love. The universe boss. A leg spin from any quarters is always welcome to see, welcome sight, and especially if it's a young lad, all the more interesting. ये जो बैटल अप होगी अनुष बनाम विक्रम या गौरांग, ये बैटल है ताजगी बनाम तजुर्बा। देखना है कि कौन आगे बढ़ता है इस बैटल में। पोटेंशियल तो है अनुष के पास एज एन ऑलराउंडर,
He's got that potential. There is no doubt about it. The big stage. He cannot let this big stage get into his psyche. Well bowled. The first three deliveries have been spot on. और अगर इस तरह की मैच्योरिटी अगर ये बंदा बताता है तो फिर ये बहुत ही बड़ी बात है. और अगर वो अपने ओवर्स ठीक तरह से 3 या 4 ओवर्स कर लेता है तो एस चार्जर्स के लिए बड़ा बोनस होगा. क्योंकि जुगराज ने ऐसे मोड़ पर उसे गेंद थमाई है तो वो नेट्स में बिल्कुल प्रभावित किया होगा पूरे थिंक टैंक को, तब जाके ऐसी स्थिति में वो गेंद मिली है. विश्वास जताया है, उस कसौटी पर अब खरा उतरना होगा. पहली 4 गेंद स्पॉट ऑन. अच्छी शुरुआत. ओ बढ़िया गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद. That came in with the arm, and to the credit of Gaurang, he didn't play for the turn, so he played it well. That's a brilliant first over, brilliant first over. What a start for this young man. क्या बात है. I would like to give a lot of credit to Jugi for introducing Anush in this kind of a situation. He kind of took a gamble. A leg spinner being introduced any time, especially in this kind of a situation, is always a gamble. All the more when it is the most youngest player of the team to bowl in this crucial stage. But he stood the test of time in that over. Very well bowled. He's earned his stripes to be in this team. कोई यूं ही इस तरह की बड़ी टीम में चलकर नहीं आ सकता है. तो yes, the young lad has earned his stripes. The match is very excitingly poised. Score at the end of 6 overs, 55 for none. What a rock solid foundation. It's time for Ronak to now contribute with the ball. He did the job with the bat. He's got to forget that. He's just got to carry that momentum into his bowling as well. 1010, the jersey number. Exciting situation. Very exciting. Oh, slow turn, the perfect delivery. देखिए विक्रम ने उस गेंद को आखिरी वक्त तक देखा, पोक नहीं किया अपने बैट को. अगर पोक करते तो फिर खतरा हो सकता था. गुड लीव, गुड बॉल एंड गुड लीव ऑल्सो. Ball has gone into the gap. We'll have to wait and watch. One bounce into the cryptomania boundary. Even somebody as good as Jigar cannot get around it. That was upish in the air. That was an aerial shot, but was in total control. Total control. He stepped out and he got ahead of the delivery. He covered his bases. Made sure that he made a connection. This is his trademark shot when he is on a song. मैंने पहले बताया कुछ समय पहले कि आज की शाम वो विंटेज विक्रम पंजवानी की झलक नजर आती हुई. झलक माइंड यू, बड़ी तेज रफ्तार से अपने उस अच्छे फॉर्म की तरफ बढ़ते हुए. फॉर्म तो छोड़े, इस मैच में थोड़ी सी तकलीफ देना चाहते हुए एस चार्जर्स को. केवल यही मंसूबा है कि गिफ्ट न करे इस मैच को. एस चार्जर्स को मैच को जीतना है तो दे हैव टू अर्न दैट विक्ट्री.
और इसी वजह से ये बहुत ही पुख्ता मैच है। स्लो टर्न, देखिए ये वाला टर्न बहुत ही खतरनाक होता है। टर्न तो प्राप्त होता हुआ, और ये एक एनकरेजमेंट होनी चाहिए रौनक के लिए। अगर इस तरह का टर्न पहली ओवर में अगर मिल रहा है तो ही शुड बी एनकरेज्ड बाय दिस साइन। फ्लैट डिलीवरी, बाल बाल बचे, बाल बाल बचे, भाग्यशाली रहे। 6.5 overs, 65 on the board. क्या बात है, what a delivery, that's a peach of a delivery, that's a japper. What a delivery to go to the defenses of the well said Vikram Panjwani. Beaten all ends up, lock, stock and barrel. But he's provided that good start. He's provided that intentful start. He would be a little disappointed. For the first time, he was looking the vintage Vikram. In comes the big match player, the big ticket player, Gopal Bhutra. Such a good match on offer for all the spectators who've come onto the ground, or those who have tuned into the GSC Facebook page or YouTube. This is such a good match on offer. जिस विकेट की खोज में थे टीम एस चार्जर्स, वो विकेट प्राप्त हुई है, और उस विकेट के चलते अब मेरे ख्याल में और सकारात्मक तरीके से इस लक्ष्य को डिफेंड करने की मेहनत करेंगे। दूसरी तरफ विक्रम की जगह पर जो बल्लेबाज उतरा है वो बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज है, अपने आप में एक नायाब प्लेयर है, नायाब हीरा है गोपाल। अपने हुनर का ट्रेलर दर्शाया इस टूर्नामेंट के दरमियान। पूरी तरह से अपने हुनर और अपनी प्रतिभा का पिक्चर नहीं बताया है गोपाल ने। अब गेंदबाजी करने के लिए स्वयं जुगराज आए हैं फार एंड की तरफ से। स्ट्राइक पर होंगे गौरांग। 7 सेजल ग्रुप ओवर्स के बाद 65 रन 1 के तरसानिया कंस्ट्रक्शन विकेट के नुकसान पर। थोड़ा सा इनसाइड द लाइन खेले विक्रम, वो रिप्ले में हमने देखा। हल्की सी गेंद टर्न हुई, यूं तो मिडल एंड लेग स्टंप के अंदर आई थी, लेकिन उस टर्न के लिए नहीं खेले, उस सीधी गेंद के लिए खेले। थोड़ी सी गेंद टर्न हुई और विकेटों को बिखर कर रख दिया। बहुत ही बड़ा विकेट, वो बड़ी मछली पेविलियन में वापस गई है। क्लीन बोल्ड, बड़ा विकेट। देखिए, दैट वाज एन अनप्लेएबल डिलीवरी। ये वाली डिलीवरी अनप्लेएबल थी। कहना होगा कि उन 2 विकेटों के चलते मैच में अपनी गिरफ्त को और मजबूत करते हुए, पकड़ को और मजबूत करते हुए, मानव गोहिल ने इस टूर्नामेंट के दरमियान ये दर्शाया है कि वो बहुत ही शानदार प्लेयर है।
लेकिन और भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे सकते थे मानव. अच्छा वैल्यू एडिशन है शरद केलकर और मानव. अब इस स्थिति में किस तरह से साथ निभाते हैं गोपाल का ये देखना होगा. दो नए बल्लेबाज विकेट पे है अब. देखिए ये अच्छी कैप्टेंसी कहूंगा क्योंकि उस अच्छे ओवर के बावजूद अनुष को रोका. खुद गेंदबाजी करने आए. कोई और कप्तान होता तो अनुष को कंटिन्यू करते. तो ये सोच करके आए हैं मैच में. और एक केतन सैन्य कंसेशन विकेट. हैट्रिक पर है जुगराज. मामला पेचीदा होता हुआ टीम चैलेंजर्स के लिए उलझता हुआ. इतनी मजबूती से अपील भी नहीं किया जुगी ने क्योंकि उन्हें पता था कि वो हाथ उठने वाला है. तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे. और एक विकेट का पतन होता हुआ 3 टॉप ऑर्डर बल्लेबाज पेविलियन में वापस जा चुके हैं. देखिए जो मनु शर्मा और गौरव यादव की जो बॉडी लैंग्वेज आप देख रहे हो ये पूरी तरह से इस मैच की स्टोरी को बयां करता हुआ. वो अचानक से 5 गेंदों में वो बॉडी लैंग्वेज बदल चुकी है. राहुल झा संकट मोचन प्लेयर. What a turnaround, what a twist in the tail. Had a feeling that if both the batters continued for some more time, ideally I mentioned earlier they had to stay unseparated at least till the drinks interval. Team hat-trick, yes, Jugi bhi hat-trick par hai, let's see. Jugraj. I hope Anush has got some protection at least. Jugi will put anybody on the line to get a hat trick. Oh, he gets a hat trick. Oh my word. Just look at the euphoria in the camp of Ace Chargers, and just look at the man who's on his way back to the pavilion. He's looking unplayable. The very first delivery that he bowled to Gaurang, that was an unplayable delivery. This was almost as good. A hat trick to Jugi. It's going to be a big party tonight. That will go long into the morning hours. Four wickets have fallen in the last 4 deliveries. That tells you the story of the match. In comes Architect. They are all pumped up now. They are all turbocharged. Turbocharged, the man in pink.
What a turnaround. पासा सिर्फ पलटा नहीं है, लेकिन किस तरह से पलटा है. 4 गेंदों में 4 विकेट्स और हैट्रिक जुगी के नाम. अद्भुत क्रिकेट, अविश्वसनीय, अकाल्पनिक. इस तरह का क्रिकेट यानी उथल पुथल होगी अब पॉइंट्स टेबल पर. अगर एस चार्जर्स इस तरह का क्रिकेट खेलते रहे तो फिर ऑपोजिशन की शामत नहीं. और इंटरेस्टिंग है ये वाला सीन. आर्किटेक्ट के लिए ये अपनी जिंदगी का सबसे टेंशन वाला लम्हा है. सबसे ज्यादा टेंशन वाला लम्हा आर्किटेक्ट के लिए ये वाला है. चलिए, शो टाइम. Butterflies in the stomach for Hardik. Collie wobbles. Is not showing it. गेंद परफेक्ट थी. वो वाली गेंद परफेक्ट थी. अच्छी तरह से खेला हार्दिक ने. अपने ऑलराउंड परफॉर्मेंस के साथ सभी को मंत्र मुग्ध करते हुए जुगराज. अब गोपाल बुतड़ा है. अब इस तरह की स्थिति में रवैया क्या होगा गोपाल का? क्या वो अपना स्वाभाविक खेल खेलेंगे? अपनी अपील को रोका. 2 सीजन्स पहले अगर जुगी होते तो फिर उस अपील को रोकते ही नहीं. ये बदलाव नजर आया है जुगी के गेम में और ये बहुत ही अच्छी बात है, स्वागतार्ह बात है. बहुत मैच्योर्ड हो चुके हैं क्योंकि अब मुंबई 23 के स्क्वाड में खेलते हैं तो ही गॉट टू लीड बाय एग्जांपल. व्हाट अ टर्न अराउंड, व्हाट अ ट्विस्ट इन द टेल. At the moment, Team Ace Chargers are all over Team Challengers. Down on the mat, Team Challengers. End of the most eventful over of the GSC T20 League, the most eventful over of the tournament. अनप्लेबल है. इस तरह के मूड में जब हो और इस तरह से वो पिच में से भी आपको मदद मिलती है तो मेरे ख्याल में कितना भी बड़ा बल्लेबाज हो वो बहुत ही मुश्किल होगा नेकेट करना. रौनक का स्पेल जारी रहेगा. अरे कुलदीप सर अभी भी मैच का आनंद उठा रहे पाजी. गोपाल
पूरी तरह से चढ़ बैठे हैं एस चार्जर्स इस वक्त. Everything falling in place for Ace Chargers tonight. Everything is working out. First things first, that wasn't such an easy catch because it was difficult to get under the ball, but once you got underneath the ball, that should have been taken. The finger goes up, one more man bites the dust. Hardik is back in the pavilion. Ketal Sanya concession wicket, half the team back in the pavilion. In comes Priyank Jain. The innings is in a complete disarray, in complete shambles. The batting lineup of team challengers has been bamboozled. This season has been indeed like a bad dream for team challengers, and they'll have to forget it very soon. To add to his half century, Sachdev Raunak 1.3 overs, 12 runs and 2 wickets. पूरी तरह से खौफ में लिपटे हुए टीम चैलेंजर्स, बहुत ही मुश्किल मामला. धैर्य डीप मिड विकेट पर. ये वाले मैच से फिर से एक बार वो जेडी एंड शुभम डेवलपर्स जीएससी T20 में वो जान आ जाएगी. वो टेम्पो बिल्ड हो चुका है. जो मोमेंटम नए साल में हम राह देख रहे थे कि कब हम कैरी फॉरवर्ड करें, वो मोमेंटम आज की शाम फिर से एक बार मिला है, क्योंकि 10 दिनों के ब्रेक के बाद हम फिर से एक बार नए साल में 3 जनवरी को शुरू हुए थे. इस मैच के चलते वो फिर से एक बार दैट फीवर विल बी बैक. Vikram Panchwani, a well-made 35 runs of 27 balls. Not enough.
How do you play that delivery? It's getting so much of bite of the surface. It's fallen into the zone. Oh, that should have been taken. He was stationed there to take that catch. The area for Fadia. That would have been such a good catch. Dare is not used to fielding in that slip position. You need a specialist fielder, but that was a good effort. Almost had him. That would have been a very good catch. Smart catch it would have been. जिस तरह की गेंदबाजी करे मेरे ख्याल से वो गली और स्लिप के बीच में और 4 प्लेयर्स को खड़ा कर सकता है. Too fast for any problem to be created. A little slow to the air, that would have been more of a challenge. But anyways, what a terrific display by Jugraj. Jugraj would love to carry this wicket everywhere. Is it clean bowled or the ball ricocheted off the wicketkeeper's gloves into the stumps? Looks like it's clean bowled. One more wicket to Jugraj. Absolutely unplayable. प्रमोदो पहली गेंद जो डाली विक्रम गौरांग को, वहीं पर पता चला कि वो अनप्लेबल होंगे. ऑलमोस्ट सिमिलर डिलीवरीज गौरांग कराकासे और राहुल झा को. गौरांग कराकासे की गेंद तो और भी बढ़िया थी. चलिए ड्रिंक्स टाइम है, टाइम फॉर अ ब्रेक.
बड़े। हिमांग भाई, वो कौन है रे, वो निकल ही जाता है। चलिए, वेलकम बैक। 61 balls and 120 runs to win the match. Hi. Neil Rai, good to see him. और एक विकेट, द सेम ओल्ड स्टोरी। इस तरह की गेंदबाजी को बैकफुट पर खेलना, यानी वो आप गए, यू गॉट टू गेट दैट फ्रंट फुट फॉरवर्ड, स्मॉदर द स्पिन, किल द स्पिन। केवल यही मंत्र होना चाहिए, जितना ज्यादा आप आपके फुट को आगे प्लांट कर सके कीजिए। बल्ले और पैड को बिल्कुल बगल में रखिए। और पहली बार ऐसा हुआ होगा मेरे ख्याल में जीएससी पे, मैंने तो नहीं देखा 4 सालों में, कि 2 ओवर्स में किसी गेंदबाज ने 5 विकेट लिए हो। प्रितपाल सिंह ने लिए, ओके, सुपर किंग्स में, यस, ओके। संजीत के लिए भी वो कीर्तिमान है, संजीत के लिए, प्रितपाल सिंह के लिए, उसमें समावेश होता हुआ जुगराज का। और जुगराज ऐसा प्लेयर है जो इस परफॉर्मेंस को आसानी से भूलने भी नहीं देगा, जीएससी के मेंबर्स को लगातार याद कराता रहेगा। जस्ट किडिंग, बहुत ही बढ़िया फॉर्म है जुगराज, इज लुकिंग दैट क्लास अपार्ट, बहुत ही शानदार फॉर्म में। पहली इनिंग्स में जो सेंचुरी मारी वो अभी तक हमारे जहन में है, उतने चाबुक शॉट्स खेले थे जुगराज ने। अब गेंदबाजी आज कितनी मीनिंगफुल इनिंग्स खेली, कितनी मीनिंगफुल इनिंग्स खेली जुगराज ने आज। और गेंदबाजी में तो बिल्कुल इज प्रोड्यूस्ड मैजिक। तो व्हेन यू टेक योर गेम फ्रॉम लास्ट टू एक्स्ट्रा लार्ज, दिस इज द रिजल्ट। वो जो उसने वेट लूज किया, जो मेहनत की अपने आप पर, वो मेहनत रंग लाती हुई। इफ यू वांट टू टर्न इनटू अ प्रो, you have to go to the process. If you fall short on that process, God save you. The ball is hissing like a cobra, unplayable. Well played, Ritik Jain. गोपाल इज वंडरिंग के ऐसा क्या हुआ मिड इनिंग्स में कि ये विकेट की फितरत ही बदल चुकी है। इसलिए जो
पिच को रीड करना ये कोई भी मास्टर नहीं कर सकता है, केवल अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह से शायद वो विकेट बिहेव करेगी। ठोस तरीके से आप किसी भी तरह से विकेट को जज नहीं कर सकते। और द फिंगर गोज अप, व्हाट अ डिसीजन, बहुत ही अच्छा डिसीजन राजू पवार सर का। हल्की सी नीक थी और क्या कैच लिया राम गोयनका ने। इस तरह के कैचेस लेना मुश्किल होता है, हालांकि स्टार स्टडेड परफॉर्मेंसेस देखने को मिले, लेकिन ये you'll have to say that this is a team that is playing like a cohesive unit. Welcome to Rajesh Sonigra. अपनी बैकयार्ड की विकेट भी अगर इस तरह से बिहेव करेगी तो मेरे ख्याल से अंदाजा किसी को भी नहीं था। बाहर जाते कभी नई जगह पर और इस तरह की विकेट मिलती है तो फिर यू नॉट दैट शॉक, लेकिन इस तरह की विकेट अपने खुद के बैकयार्ड में, ये सोचने वाली बात है। The spoils to the credit of Jugraj and Sanjeet. Sanjeet 3 wickets and Jugraj 5. All the wickets that have fallen have been shared between Ronak and Jugraj. End of the over. Score after 11 overs, 74 for the loss of 8 Talsania construction wickets. केवल औपचारिकता से गुजरते हुए हम, the writing is on the wall. Yes, you can really say that they have bitten the bullet. This kind of a wicket can be a graveyard to any batting lineup. ये विकेट पे खेलना बहुत ही मुश्किल है और स्ट्रोक्स को खेलना तो और भी ज्यादा मुश्किल है। ज्यादा से ज्यादा आप बिल्कुल आगे खेल के वो स्पिन को स्मॉदर कर सकते हैं, लेकिन वो जब 3 या 4 प्लेयर्स आपके इर्द गिर्द क्लोज इन खड़े हुए तो फ्रंट फुट पर खेलने को भी थोड़ा सा डर लगता है। Yes, so this wicket is proving to be the graveyard for team challenges. It could have been the case for any team in this tournament. That's the nature of the wicket. और जिस तरह की विकेट कीपिंग दर्शाई है राम गोयनका ने, केवल एक स्पेशलिस्ट विकेट कीपर इस तरह की विकेट पर इतनी पुख्ता तरीके से विकेट कीपिंग कर सकता है। Into his third over. No.
Cryptomania boundary in the form of buys. $76 for 8. Two balls left in this over. Is into his third over, Jugraj. Well played. No, that's too easy. The final ball coming up in this over. End of the over. 3 overs, 5 runs is what is given, and has picked up 5 wickets in the bargain. Sachdev Raunak, 3 overs, 15 runs, 3 wickets. Look at the economy rate, 1.67. Managing to send half the team packing into the pavilion. That is Jugraj. No need to even look at the app for the man of the match. That goes to Jugraj. No guesses there. They are on a roll. Team Ace Chargers are on a roll. Our Team Ace Chargers reserving their best cricket for the business end? And if that is the case, that would be such a big blessing. And that would be the morale booster for the GSC T20 as well. मानव देवली, स्क्वाड देख लीजिए इस चार्जर्स का, बहुत ही शानदार लगता हुआ. नायर को चीयर करने में कोई कमी नहीं है. Jugi, that's such a good delivery. That delivery holding on to its line. मानव ने भी इस टूर्नामेंट के दरमियान अपने हुनर का परिचय दिया. is given that glimpse of talent in him. अपनी कला को और ज्यादा पॉलिश करना होगा, मेहनत करनी होगी. इस तरह की गेंदों को अपने बॉलिंग अटैक से बाहर रखना होगा. बहुत ही ज्यादा फुल. एक फुट गेंद की लंबाई को खींचना था. कलेक्ट करते तो ये मामला गड़बड़ा सकता था. अपने कॉल को रिवर्स किया है. लेग बाइस के रूप में क्रिप्टोमेनिया चौका.
अगर गेंद को कलेक्ट कर लेते तो पूरा ड्रीम स्टंपिंग होता. 13 overs, 89 for 8. 42 balls, 103 to win. A little surprised that he's given himself a break. Definitely surprising. One would have thought he would bowl his fourth over. If one was looking to polish off the tail, then that man had to continue. Anyways, Sanjeet now being brought into the attack from his preferred end. He loves that end. Very rarely you will see Sanjeet bowling from this end. He's got so comfortable bowling from that end that ideally he will not be wanting to bowl from this end. It wouldn't surprise me if he's refused the captain to bowl from that end. Sometimes you got to come out of your comfort zone. What a night this is turning out to be for Ace Chargers. So many positives that they're collecting. So many positives. This is almost like a dream run, this match. Everything working to a plan. मानो कि पूरी कायनात लगी हुई है टीम एस चार्जर्स को अपनी मंजिल तक ले जाने में. उस तरह का ये मैच है. राहुल जी अभी जानते हैं कि इस तरह की स्थिति में ज्यादा कुछ कोई भी नहीं कर सकता है. कोशिश कितनी भी कर ले. Well played. Facing a seam bowler will be such a relief. Yash Gadia, Raghav Ramchandran watching the proceedings from the other end, the other side. चलिए और एक विकेट का पतन के तरसाना कंस्ट्रक्शन विकेट. अब ऐसे स्थिति में रनआउट होना यानी एक तरह की आत्महत्या है. उन्हें पता है, he knows it inside that is out and that is why he was already on his way back. But yes, so we got to do the job. The third umpire, the TV umpire, Ajit Chavan sir. जीतू मंडोल का स्वागत है. जीतू मंडोल भी हॉट प्रॉपर्टी होंगे ऑक्शन के लिए. टीम मैन है जीतू मंडोल, इस वजह से हॉट प्रॉपर्टी होंगे. गेंदबाजी, बल्लेबाजी, क्षेत्र रक्षण
सभी कुछ अच्छी तरह से कर लेते हैं. There you go. नहीं, बैट्समैन निकल रहा था, लेकिन देखना यह था कि जब वो विकेट्स को डिस्टर्ब किया तब बॉल हाथ में था या नहीं. वो लिमिटेड रिसोर्सेज है, आगे का एंगल होता तो परफेक्ट दिखता. तो इस वजह से वो थर्ड अंपायर की जॉब बहुत ही डेंजरस है. सबसे बड़ा मसला टीवी अंपायर के लिए, क्योंकि माफी है ही नहीं. हमें ऐसा ही लगता है कि जो हम टीवी पे देखते वही वाला सेटअप यहां पर है. $92 for 9. This match is like a fairy tale for Team Ace Chargers. वो जो ब्रेक मिला 2024 और 2025 के बीच, अच्छा गेम प्लान बनाया है, अच्छी तैयारी की. स्लो गेंद थी, लेकिन बहुत ज्यादा फुल भी थी, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं. तिरानवे रन्स बने हैं. One ball to come in the 14th Sejal group over. 9K Talsania construction wickets have fallen. पहली और आखिरी बार गौरव को इस मैच में कंट्रीब्यूशन करने का मौका मिला था. गवा दिया. बड़ी आशा से पैड पहन के रखे थे आधे घंटे तक, लेकिन बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला. लेकिन जो भी कुछ हुआ है, बहुत ही खुश होंगे गौरव और पूरी थिंक टैंक. इसी तरह के मैच की जरूरत थी ताकि एक बड़ी वापसी करे. वो आत्मविश्वास जब अगले मैच में उतरेंगे खेलने के लिए, तब वो बहुत ही जबरदस्त होगा. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट अ टीम नीड्स व्हेन यू आर अप्रोचिंग द बिजनेस एंड. और गौरव यादव और वीर सरवैया दोनों ने ही वो पॉजिटिव एम्बियंस बनाए रखा पूरे टूर्नामेंट के दरमियान. He comes back. Why did he halt himself in the first place? Maybe वो एंड चाहते थे संजीत. चले 5 विकेट्स ले चुके हैं. Who will deliver the death punch?
अपनी बेस को पूरा कवर किया, तीनों स्टंप्स को कवर किया, फिर उस गेंद को जाने दिया. कितना ज्यादा टर्न, कितना ज्यादा टर्न. जुगराज जुगराज ये विकेट शिवल से सभी जगह पर ले जाना चाहेंगे. ये विकेट को इस तरह की विकेट पर वो एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं लगानी है. यू हैव टू पुट द बॉल इन द राइट प्लेस, लेट द विकेट डू द रेस्ट. जुगराज कहेंगे कि मैंने 5 विकेट से लिए, उसके बावजूद मुझे एडवाइस मिल रही है. कह सकता है वो. Rahul Jha, yes, 100 up on the board. Something to cheer. चलिए, that's an early finish. Shivals, for once we get an early finish. Congratulations to Team Ace Chargers for the kind of cricket that they dished out. That was a fairy tale, a dream run. This is going to be that morale booster win, exactly what they wanted. Inviting everybody to get to the presentation area in good time. Yes, for the presentation party, we will have Prasad Karkera and Monish. May I invite Hemang Pandit and Shilpa Sarvaiya to please come to the stage, and Mr. Veer Sarvaiya as well. Hello. Charges inviting Hemang Pandit, the co-owner of team Challengers Monish, Prasad Karkera,
Yes, inviting Shitalji Yadav to please come up on stage. Shital Yadav. We've got Mr. and Mrs. Will Sarvaiya, Hemang Pandit, Prasad Karkera, Monish. And yes, inviting Mrs. Yadav to please come on stage. May I invite Lopa Shah to please come on stage. Lopa Shah. Yes, a good evening and a warm welcome to the post-match presentation. Match number 36 is over. Congratulations to Team Ace Chargers for that comprehensive win. They were too good in all the three departments. Exactly the kind of win that they wanted as they get into the business end of the tournament. Once again, the same story for Team Challengers. May I invite Vikram Panjwani to please come up. It breaks my heart to talk to him in this kind of a situation. The ever optimistic Vikram Panjwani. Vikram, I'm sure that you're gonna be just forgetting this season like a bad dream. You all tried everything, but nothing worked to your favor, and not the way you want to exit this tournament. Yes, definitely, but there's no shame in being, on the other side of the match with players like Jugraj and Ronak. It was a magical spell. We were going good. We had a great start. We were almost 60 for no loss. And from there to be 100 all out, it shows the character of this team. And, at the day of the auction, I told Gaurav that this is a finalist team. And my best wishes are with them. They have the team and I really wish they play the way they played today. They have the talent and potential to go all the way, and I wish them good luck. And for my team, keep your shoulders high, guys. It was a tough season for us, but never mind. We learn from this. Phases keep coming in life, and cricket changes every moment, every day, and we'll surely come back stronger next season. And nicely summed up. Couldn't have really come up with better words. And yes, exactly. One look at that full squad of Team Ace Chargers. You all are a blockbuster combination. Now we got to go the distance, the kind of cricket that you guys dished out. You all have taken the GSC T20 up a notch, or a couple of notches higher. So that's the kind of fantastic cricket you guys played. It's time for me to invite the winning team captain to please come up on stage and have a word or two with us. Gaurav Yadav. Congratulations on that terrific win. वो 2024 से 2025 के दरमियान वो 10 दिनों में स्ट्रेटजी बनाई और बड़ी शिद्दत से तैयारी करके उतरे और बहुत ही अविश्वसनीय और अद्भुत क्रिकेट खेला आज. Yes, thank you very much. I think today was the first day that we were playing with the full squad, and that's the first thing when I said we are a team that struggled with 10 players at a time, but we are a full squad today, and I'm glad that we could deliver. But for the fifth time in a row, I'll say that we are still in it. We are still not out of it yet, and hopefully one good game will take us into the playoffs. But I would not want to end this without calling Sanjeet. It is his runs and such a difficult wicket. You get a life or two, but it was clean hitting. It was hitting of another level. He wasn't slogging at all. So I think to me, he's the man that started our charge. So I'll just let him finish this for me. Oh, hello, hi guys. So in the afternoon, Jugraj messaged me saying that will you open the innings. I was very double-minded about it, but what I told him was that I'm a team man. It doesn't matter if I if I bat first or I bowl first. In the first over, it doesn't matter. What matters is to get those 2 points on the board, and I really want to lift the cup. I've been playing these tournaments in the last 8 years and I haven't won any tournament here. So this is the year. This is the year I'm gonna win this tournament.
No better motivation than looking to grab your first trophy. So that's the way he's nice to put it up, and he always loves to be called the batting all-rounder, and I've had a couple of chats with him. He wants to be recognized better as a batsman, and that innings has helped you go to that reputation. So well done, well played. It's time for me to now invite the man of the match over. No guesses there. Even before the match could end, we had already let the cat out of the bag. Jugraj, 52 runs, not out, 6 wickets, an unplayable magic spell. So now this man has really worked hard in the off season. He's lost so much of weight. He's qualified for the Mumbai under 23 team wearing those Mumbai colors. That's a dream come true, and I'm sure that Jugraj will go even further up. Congratulations to hand over the man of the match award. It's Mr. Himang Pandit, the co-owner and our boundary sponsor, to hand over the man of the match award. Jugraj, you got to wait back. Prasad Karkera will put that purple cap on the head of Jugraj. 4 matches, 12 wickets, economy of 5.43, average 7.17. Everything falling in place. So congratulations. If Prasad Karkera, Jugraj, क्या कहेंगे? बहुत ही जबरदस्त जीत, आपका all-round performance. You all really played like a cohesive unit. It was a fairy tale. So the first motivation that I had today morning was my owner Gaurav bhai calling me for breakfast today in the morning to discuss the team strategies. So हम लोग का यही thought process था कि हमें 2 point लेना with good net run rate. So that was the team effort, and I appreciate everybody who is there today here supporting me, who has been supporting me. Veer bhai, Gaurav bhai, my parents, everybody. This one goes to them. Yes, well done. Prasad, you would like to add anything to it? With this, we come to an end of this wonderful evening. What a robust cricket match we got to see. Terrific cricket. So thank you guys for dishing out such a wonderful cricket game. Tomorrow again, toss time, 6:30 p.m. With this, we come to an end. Good night. God bless. Take care. GSC T20 का जादू है सर पे चढ़ा। yo.